Hello everyone and welcome to the MEP QAQC Pro channel. This channel is all about QA/QC engineers. In my previous video I already explained difference QA/QC इंजीनियर में क्या डिफरेंस है वो आप वहां पर जाके दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाउ अ फ्रेशर और द एक्सपीरियंस गाय हु वांट टू गेट द जॉब इन QA/QC इंजीनियर क्या स्ट्रक्चर है क्या प्लान करना पड़ेगा ये एवरीथिंग वी विल गेट टू नो हियर in this video. So without wasting time, let's get started. So nowadays, especially in Dubai or in UAE, construction boom में for QAQC engineer we have very less qualified QAQC engineer, especially the fresher and the experienced guy who is working other field and he want to get a job in the construction field. एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में उनको जॉब लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस नहीं है। सो एक्सपीरियंस आपको ज़रूर इसलिए है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज QAQC इंजीनियर एंड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द QAQC इंजीनियर एंड व्हाट दे आर डूइंग इन ड्यूरेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्टार्टिंग टू द beginning to end. So you need to understand what QAQC engineers difference and roles and responsibility which I already explained in the previous video. You can go there and check it. You will understand what actually the difference make. So QAQC engineers के फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंट ग्रेजुएट के लिए सबसे इजी पाथ है वो कैरियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं QAQC इंजीनियर में। और QAQC इंजीनियर से स्टार्ट जैसे वो करेंगे अपने भी किसी भी फील्ड पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको नॉलेज पूरे फील्ड का होगा as a mechanical, electrical, plumbing, whatever. You can get it the knowledge from there. And from there, if you get the experience, so now you can choose your path. Yani you want to go in the engineering field or you will continue in the quality field. तो ये एक फायदा है QAQC इंजीनियर्स का। QAQC इंजीनियर्स बेसिकली वो बिटवीन में होता है और अराउंड उनके सारे प्रोक्यूरमेंट, स्टोर्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वो सारे अराउंड में होते हो। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि किसी इंजीनियर्स को वो हर एक साइड से नॉलेज ले सकते हैं। तो आपको कैसे जॉब मिलेगी क्योंकि किसी इंजीनियर में, सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली द फ्रेशर जर्नी ओवरकमिंग कॉमन चैलेंज। जो भी फ्रेशर है उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज ये है कि उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। दूसरा चैलेंज है उनके पास कोई भी इंडस्ट्रियल गैप नहीं है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस आप कैसे कम you know how you can get the experience and how you can minimize the gap of industrial knowledge. The lack of experience and industrial knowledge आप इस चैनल में easily you can get it everything. You don't need to go anywhere. This channel is all about you. You can get it very easily. I'll give you with the basic knowledge, I will give you the medium knowledge, I will give you advanced knowledge, everything I will be here to share with you. That's why I created this channel to help you people. I know so many people are suffering to get the job, but I want to make sure that everyone get the job, especially in the QAQC engineer, because this field is very easy. You can get the jobs as soon as you do the hard work and you will get the job. So lack of experience क्या होता है? Lack of experience ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे भी ग्रेजुएट करते हैं आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। बट ओके अगर आप अभी भी ग्रेजुएशन में हैं यू नो आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर ईयर यू विल बी गेट ग्रेजुएटेड। सो आपके पास अभी टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके पास हर एक वीडियो डायरेक्टली मिलेगा। आपको नोट्स बनाने का आप नोट्स बनाइए कि आपने क्या क्या सीखा। उस नोट्स को आप किसी तरह एक्सेल्स में वर्ड में आपको उसको फाइनलाइज कीजिए। एक स्ट्रक्चर बनाइए कि हाँ आपने क्या क्या सीखा है और क्या क्या क्वालिटीज के अंदर आता है। तो थ्रू देयर यू कैन गेट इट व्हाट बेसिक नॉलेज ऑफ QAQC इंजीनियर। तो आपको वो ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस चाहिए। यू विल गेट ट्रेनिंग। यू गेट द ट्रेनिंग ऑलरेडी फ्रॉम हेयर। एम्प्लॉयर्स वैल्यू एगेनेस्ट टू लर्न। इसका में ये हुआ कि आप कैसे जो चीज़ आपने सीखा है वो कैसे आप एम्प्लॉयर्स को यानी जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा हो उसको आप कैसे बेनिफिशियली दे सकते हैं कि हाँ यू आर द वन हु कैन बी एज ए QAQC इंजीनियर। सो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको
कंटिन्यूअस लर्न करना पड़ेगा सिंस यू आर इन द कॉलेज नाउ। और अगर आप किसी भी जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप अभी से ही एटलीस्ट जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं उनको डेली वाइज वीकली वाइज आप देखें और उसका नोट्स बनाएं। ओके। इंडस्ट्रियल नॉलेज गैप्स, यस आपके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है, that is not a worry. You don't need to get certificate. I already clarify in the last video. Just go and watch. For fresher it's not required. Okay, for the experienced people they can require, but for meanwhile you don't need to do. At least you start your job. Once you have get the experience you can go for any certificate as per your convenience. Online course and volunteering at the construction site. जब भी आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में हैं तो फॉर श्योर किसी भी इंडस्ट्री में हो फॉर श्योर वहाँ पे क्यों किसी ये क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, एटलीस्ट उनसे थोड़ा बहुत समझिए कि क्वालिटी है क्या, वो करते क्या, उनसे थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है उनका पूरा चीज़ सीखना। रिमेनिंग्स आप यहाँ पे आराम से सीख सकते हैं। ओके, लेट्स गो न्यू एसेंशियल स्किल्स मास्टरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस। सो स्किल्स क्या क्या होना चाहिए आपके पास एक्चुअली since you are in the college or you are doing jobs in other field, आपके पास टेक्निकल नॉलेज क्या क्या मिलेगा जब when we are going to start any jobs in QAQC. You need to understand first drawings. There is a drawings which is based on construction, how you are going to perform and what you are going to check. So this all you need to follow with the drawing. So you need to understand the basic knowledge of drawings, how you can check the drawings, code and standard also I will explain here. You need to check the codes and standard of the project plus the material that you need to understand. ओके, एंड सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए आपके पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक टीम वर्क एबिलिटी होनी चाहिए, और फॉर कोलैबोरेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज एज ए क्यूएक्यूसी इंजीनियर आपके साथ कोऑर्डिनेशन में आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होंगे, साइट डिपार्टमेंट होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होंगे, तो सबके साथ आपको कोलैबोरेशन रखना। सो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक जो स्किल्स है वो आपके पास होना चाहिए, और ये स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा ही, प्लस टेक्निकल एक्सपर्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज़। बिल्डिंग योर रिज्यूमे शोइंग योर एबिलिटीज। ओके, जो फ्रेशर है और फॉर उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, बट यस once you are finishing the full video watching everything from my side, and whoever you are following, once you are following them, you are watching, you can put some uh, relevant data as a academic academic course, that you did this something here, you did QAQC engineer something, you make some project registered or WIR inspection, everything you can mention as a compliment, because it will show to you, or it will show to your means wherever you are going for apply the jobs, or they were calling you for a interview, so they can understand, okay, you have some basic knowledge. So as a fresher they can pick you, okay, you have already knowledge, and once they will put you in the project, from there you will be more knowledgeable and you will be more experienced, so they will understand, okay, you have some basic knowledge, आप कर सकते हो, इसीलिए आपको वो फॉर श्योर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये सब आपको अपने रेज्यूमे में डालना चाहिए। एंड फॉर रेज्यूमे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक द रेज्यूमे, especially for the construction field, because we have different types of resume, which everyone is copying. I did so many interviews to people. I just saw when they are bringing their resume, it was like normal resume. It doesn't show that you have ability to show to work in the construction. So for resume I will explain you each and everything, how you can make resume, how you can show your skills there, how you can show your the experience without having experience. Since you are always watching the videos, everything I'm explaining, and from there you will get the experience. Consider this is as an experience you are getting as actual from the construction. Since okay, for software proficiencies, as a software competency, what you need to do is, since you are also in college and you are working other field, first better go and take as a normal class of AutoCAD from anywhere. Go and take some normal
basic knowledge of AutoCAD, do some AutoCAD drawings, how they are doing drawings and all everything. From there, AutoCAD is a basic. Whenever you want to do check something in drawings, so you will open AutoCAD and you can see everything. And see Beam. Beam software is very nowadays is very very boom, because every projects they are choosing Beam because it's first of all Beam. Beam, why Beam they are choosing? From Beam we can analyze the clashes, we can analyze how the pipe is going, we don't need to go outside, we can see from the Beam everything you will see in the 3D drawings. So Beam knowledge is also relevant to your field. But if you are experienced, I don't recommend to go Beam now, but just do AutoCAD to understand what AutoCAD is and how drawings are checking, how you are taking the measurement, which size, everything. Just get the experience from AutoCAD like for 1 month or 2 months as per your convenience. The last one is securing your spot, landing the perfect job in the QAQC. Once you learn everything from the basic to advanced, once you will get some training, once you will get some certificated, once you will get some experience from the video or from the works, and after once you are making your own notes from here there, this is now you got some experience, you got some knowledge, so that is the right time you should start targeting the company. If you are India, if you are in UAE, if you are wherever you are, you need to start targeting the jobs. Since you already graduate now, this is the right time you have to apply for a basic as a junior QAQC engineer or as an inspector. You can easily get the job. You need to go to LinkedIn or Naukri Gulf. Many things is there. You need to create your LinkedIn profile as a professional profile. You will show your skills, your experience, your knowledge, something, make it. And also you have to make your own resume, perfect resume. Then after that, start targeting, search the construction company, search the MEP construction company, search the manufacturing company, search as based on your research, based on your convenience, which company you want to go. Target them, send your VC, send your CV, send your the portfolio that you did. But as you are the what is called, as you are experienced, sorry, as you are in the fresher, but you have this much knowledge, so they will understand, okay, as a fresher, as a graduate guy, you got some knowledge, you have some idea, for sure they will call you for interview. From there you can easily land your job. So this is my advice to everyone. To now the 2025 is a very good opportunity to get the job, because now there's a huge demand in the market, especially in UAE. Okay, guys, and thank you very much. I hope everyone enjoy this video, and please don't forget to like and subscribe. And if you want anything, if you want to cover, please send me the comment, send me email, send me any topic you want to do, you want to learn about this topic. I'm sure I will make it, or our team will make it. So please, let's do it and let's get together, let's work together and grow together. Thank you very much.